sir would like to introduce himself and we will proceed with today's. Thank you so much, Estelle. Good morning to all of you. And as Estelle has already expressed her gratitude, I would like to congratulate all of you to come here on this very hectic day. Although the traffic was low, but we all saw the security diversions and the traffic that was due to the launching of the Parliament House, I guess. And in fact, I heard that the trafficade of the Prime Minister will be passing from this very street. So it's quite a successful trip that you've all undertaken. And I welcome you formally on behalf of Sadham Samvad and HWPL. Sadham Samvad is an interfaith organization that has been in existence since 2008. We are a youth-based organization, and we try to use religion as a tool for social amelioration. First of all, I would like to introduce HWPL's 10th annual commemoration of the Declaration of the World Peace and the Peace Walk event. The event you attended today is HWPL's 10th annual commemoration of the Declaration of World Peace and the Peace Walk. In commemoration of this day, the HWPL Peace Walk campaign is being held in many cities worldwide. Chandokji is amongst us. I would invite him to the stage. Please, if we can give a round of applause. Originally, as we know, the event was scheduled to be held at India Gate, a memorial to the sacrifices of the Indian soldiers in the World War I, but due to unavoidable circumstances, and as I've already stated, you all know the circumstances, it wasn't held there. The time and place have changed, but thank you for understanding and attending. We hope the next Peace Walk campaign will be held at India Gate with you and many more Indian citizens. This event started with a Peace Walk event held in front of the World Peace Gate in Seoul, South Korea on May 25, 2013. And on this same day in 2013, the Declaration of World Peace was announced, calling for the enactment of international peace law, and a Peace Walk campaign was held. Man E. Lee, chairman of HWPL, has been working hard to enact international laws for the cessation of global wars and for peace, and particularly religious peace. Chairman Lee served as a combat soldier on the front line during the Korean War when he was young. There he saw many young people sacrificed in war. The innocent victims of war were young people. We should honor the servicemen who died in blooming age, and no more innocent lives should be sacrificed. Chairman Lee has been working hard for peace and the cessation of war and violence for the sake of peace and making laws to end throughout his life. So the law can end war is the 10 articles and 38 clauses of the DPCW, which is the Declaration of Peace and Cessation of War. These 10 articles and 38 clauses of DPCW are legal propositions made by 19 international law experts from around the world to realize Chairman Lee's conviction and dream. Here is the most powerful alternative to ending global war and violence. Also, 80% of wars are caused by religion. Accordingly, the War Office is operated as a venue for discussions with religious leaders to promote understanding and harmony among different religions. Sooner or later, through the Religious Peace Academy,
HWPL will open the field for completing comparative knowledge of scriptures for deeper understanding and research beyond the comparison of scriptures. Since the beginning of the 20th century, only 110 people have received the Nobel Peace Prize. However, world peace has not yet been achieved, and many countries are still torn in conflict and the war is not over. Even today, all peace-loving citizens all over the world are participating in peace walk campaigns, holding signs and shouting slogans. The slogans of peace that you are shouting out will reach the heavens and bring about amazing changes. I hope you will listen to Chairman Lee's presentation today and please join him in his steps towards real peace. Thank you. Round of applause, please. Thank you, sir. Thank you so much. Nextly, I would like to call Tarun Kumar Sharma from the World's Mirror, Chief Editor, Foreign Affairs. Thank you so much, sir, for spending your valuable time here. Please give a round of applause. Thank you, sir. Now we would like to call Mr. Vijendra Kumar Pal. I think Vijendra sir has not yet arrived, would be delayed, so we can proceed with the next one. Nextly, I would like to call Kiran Sinha, who is the Secretary of HWPL Association Organization of Peace. Thank you so much, ma'am, for your valuable time. Thank you, ma'am. Now I would like to call Premjit Singh Chando, Chief Advisor of Delhi Advisory to President Delhi Sikh Gurdwara Management Committee. Thank you so much, ma'am, for being with us. And so I would shortly explain what we're going to do today, the contents of today's event. Firstly, we will watch a video of Chairman of HWPL, Manhi Lee, and nextly there will be speech by Ms. Deepa Shukla, Executive Member of HWPL Women's Association, and also Ms. Kiran would join together. And thirdly, there will be speech by Paramjit Singh Chando, Chief Advisor to President Delhi Sikh Gurdwara Management Committee, and then I would give a brief explanation about HWPL and also DPCW, and lastly we will sign up the support form for DPCW and sign up the membership for HWPL together, and the most memorable part is capturing the pictures. So lastly we will do commemorative photo. Truly, thank you for your hard work. I think it was about 10 years ago from today. It was at this very place that we shouted for world peace. After that, we circled the globe 31 times and carried out this peace work. When I think about what happened in war, there are painful memories. There was the battle in the valley, and although there were bombs shelled for our side, it still gets fired at the valley. It's not just one or two shells. It is raining down, pour down. Who would be able to survive this? और इनका बहुत-बहुत वेलकम है, प्लीज सिट डाउन। उसके अलावा मिस्टर एचपी कैन जी हमारे बीच में बहुत ही सीनियर पर्सन है। ये रिटायर्ड चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स हैं और इसके साथ हमारी HWPL से पिछले 2014 से जुड़े हुए हैं और ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं। उसके अलावा इनकी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मेरठ के पास है
और उसके में ये बहुत सारी वुमेन्स के लिए काम करते हैं, उनके लिए स्टिचिंग का काम और कंप्यूटर एजुकेशन का काम भी कर रहे हैं। उसके अलावा ये बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े हुए हैं और उसको वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंट करते हैं। इनका स्वागत है। और श्री मनोज सिंह जी के बारे में आप सभी जानते ही हैं। ये जितने भी रिलीजियस लीडर हैं हमारे और उनके साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं और चेयरमैन हैं ऑर्गेनाइजेशन के। और वर्ल्ड जो हमारी जो HWPL है इसके साथ के एसोसिएट हैं। धन्यवाद। और अब श्री प्रवीण सिंह केलोत जी हमारे बीच हैं। ये दिल्ली से कोलैबोरेशन कमेटी से हैं। ये उनकी जो इंटरनेशनल अफेयर्स की कमेटी है उसके चेयरमैन हैं। और इसके अलावा ये ह्यूमन राइट्स के लिए भी काम करते हैं और बहुत सारी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। लगभग सभी धार्मिक प्रोग्रामों में ये शामिल होते हैं। धन्यवाद आपका। इसके बाद हमारे पास उज्ज्वला वुमेन एसोसिएशन के भी बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव आए हैं और इसमें उनका स्वागत है। और ये वुमेन्स के लिए अभी बड़ा जो है योगदान दे रहे हैं। इसमें हमारे मिसेज केविन सिन्हा जी हैं हमारे भी, जो आपके सामने अभी आए थे। ये सभी वुमेन्स मिलकर वुमेन्स के लिए जो जिस तरह भी हो सकता है उनके लिए हेल्प करते हैं। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you so much for giving a brief introduction. Now I would like to call Ms. Kiran Sinha forward to speak few words on their organization. सर्वधर्म संसद का फाउंडर मेंबर भी हूँ। मेरे साथ मनोज सिंह जी ने भी कई मंचों के ऊपर हमने पीस के लिए काम किया है। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है वो पार्लियामेंट के एक्ट के मुताबिक बनी है और हर 4 साल बाद उसका चुनाव होता है। जैसे प्रक्रिया MP की होती है या MLA होती है वैसी ही हमारी प्रक्रिया है। और ये संस्था जो है गरीब जनता के लिए और गरीबों के उद्धार के लिए काम करती है। गुरुद्वारों में गुरबाणी होती है और साथ में गुरु का लंगर होता है। चाहे कहीं भी कोई भी डिजास्टर आ जाए तो दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी सबसे पहले लंगर का प्रोग्राम करती है। अभी कोरोना काल में भी हमने 2 लाख लोगों को रोज गुरुद्वारा बंगला साहब से लंगर दिया और ये मानवता की सेवा की। ये गुरु नानक का संदेश है जो हमने ये काम किया है। सिख धर्म बना ही इसलिए है कि मानवता की सेवा के लिए, पीस के लिए। आज का जो प्रोग्राम है वो डेडिकेटेड टू है गुरु अर्जन देव जी की शहादत। हमारे 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी जिन्हों के जागीर ने एक अत्याचार किया और उनको एक किस्म की सजा दी कि वो मानवता की सेवा क्यों कर रहा। उन्होंने दरबार साहब गोल्डन टेम्पल का निर्माण क्यों किया, एक नया पद क्यों चलाया जा रहा है। तो उनको एक गर्म तवे को उठाया गया 3 दिन लगातार और सिर में गर्म तेल रेत डाली गई। साई मियां ने जिन्होंने दरबार साहब का नहीं पता रखा था, लाहौर में वो आए गुरु जी के पास, गुरु जी आप हुक्म करें दिल्ली की और लाहौर की ईंट से ईंट बजा देंगे। तो गुरु जी ने कहा नो, तेरा किया मीठा लागे। जो उस गुरु का हुक्म है उसके बारे में हमें चलना है। हमने कोई अत्याचार नहीं करना, कोई बदला नहीं लेना। और वो शांति के पुज गुरु अर्जन देव जी ने अपनी शहादत दे दी इस मुल्क के लिए, इस मुल्क का जो एक पीस के लिए, जो अत्याचार उस टाइम जागीर डालना उसको ठंड पहुंचाने के लिए। उसी के लिए हम गुरु के जिस शहादत वाले दिन छबील लगाते हैं, मीठा जल लगाते हैं, ताकि वो जो मीठे जल से एक स्वभाव मीठा रहे, हमें गर्म नहीं होना। गुरु को अर्जन देव जी की शहादत के बाद उनके पोते गुरतेग बहादुर ने जब कश्मीरी पंडितों ने आके उनसे फरियाद की कि हमारा धर्म खतरे में है, तो गुरतेग बहादुर ने दिल्ली के चांदनी चौक में आके शहादत दी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। आज अगर हम हिंदू है या सिख है तो गुरतेग बहादुर की कुर्बानी के लिए है। जो वो कुर्बानी रहते तो शायद यहाँ पे आज कोई भी हिंदू और सिख नजर न आता।
गुरु गोविंद सिंह ने अपने चारों बेटे इस हिंदुस्तान के लिए मार दिए। 2 बेटे जंग में और 2 बेटे सरहद की दीवार में चढ़वा दिए। माता जी को शहीद करा दिया क्योंकि हमारे देश की एकता अखंडता बनी रहे। वो संदेश आज हम लेकर सब चल रहे हैं। हमें पीस चाहिए दुनिया में। आज जो नफरत का बीज बोया जा रहा है, उस बीज को खत्म करने के लिए HWPL और दिल्ली से गुरुद्वारा कमेटी ने आज एक शपथ लेनी है कि हम उस अत्याचार को खत्म करने के लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, हम जाएंगे। हर चीज का समाधान है। डायलॉग से हम बात कर सकते हैं। डायलॉग एक सिस्टम है, लड़ाई कोई सिस्टम नहीं है। जहां भी युद्ध हो रहा है हमें चाहिए उसकी शांति के लिए। आज बड़ी ताकतें जो है दुनिया में, वो हर छोटे देश को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे आज के दिन के ऊपर HWPL के साथ यही प्रण है कि हम दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और सिख कम्युनिटी आपके साथ हर कदम के साथ कदम मिलाकर चलेगी और जो भी जहां भी कोई काम होगा हम सबसे आगे होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू सरपंच सिंह चनोक जी, आपने बहुत अच्छा बताया। ह्यूमन राइट्स के लिए सिख को हमने क्या किया और हमें आगे भी ऐसे ही अमन से रहते हुए विदाउट किसी वेपन को उठाए अमन से हमने आपस में शांति बनाए रखना है। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you so much. Now I would like to call Manu Singh to share a message on peace. And as Manu Singh is also cooperating together with HWPL. वाघा बॉर्डर पे भी परमजीत जी ने, गोस्वामी सुशील जी ने, लोकेश मुनि जी ने पीस मार्च निकाला है, जहाँ पर ये दिखाया जाता है कि सैन्य दृष्टि से हम कितने शक्तिशाली हैं। ऐसी जगह जाकर भी हमारे संतों ने, परमजीत जी ने वहां पर एक ऐसा संदेश भेजा था पाकिस्तान को और भारत, दोनों देशों, दोनों राष्ट्रों को, कि हमारे देश में सारे धर्म साथ मिलकर रहते हैं और शांति का संदेश देते हैं। उस वीडियो को कई करोड़ लाइक्स मिले हैं, हर न्यूज चैनल पे वो दिखाया गया था और जब भी मैं वो वीडियो देखता हूँ मुझे परमजीत जी की याद आती है। तो बहुत ही अद्भुत कार्य कर रहे हैं। HWPL तो मेरे लिए एक परिवार की तरह हो गया है। पिछले 10 साल से हम जुड़े हुए हैं और चेयरमैन ली को आप देखें तो सबसे पहले तो जो सबसे पहला संदेश उनको देखकर मिलता है वो है कि कैसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। 91 ईयर्स उनकी आयु है, उसके बावजूद आप उनका फिटनेस देखें और फिटनेस के साथ साथ जो उनके अंदर पैशन है पीस के प्रति और युद्धों को जो जिस प्रकार का भी संग्राम चल रहा हो, जिस प्रकार की हिंसा चल रही हो, उसे रोकने के लिए जिस प्रकार वो सतत परिश्रम कर रहे हैं इस उम्र में भी, वो सराहनीय। हम सबको उनके लिए आज एक प्रेयर साइलेंट करनी चाहिए और साथ ही साथ उनको साधुवाद भेजना चाहिए। दोनों चीजें, धर्म बहुत आवश्यक है आपकी आत्मशुद्धि के लिए, राष्ट्रवाद बहुत आवश्यक है राष्ट्र की शुद्धि के लिए, लेकिन जब हम उसे परस्पर कॉम्पिटिटिव धर्म या राष्ट्रवाद देखने लगते हैं तो हमारा जीवन त्रुटियों से भर जाता है, हम आक्रामक हो जाते हैं। ऐसे न्यायिक शांति के लिए बहुत आवश्यक है कि हम HWPL के साथ जुड़े और जो डिक्लेरेशन है बहुत अच्छे तरीके से उसका निर्माण हुआ है, उसकी रचना हुई है, उसका पूरा समर्थन करें और अपने देश में भी चाहें कि किसी प्रकार, आज नया पार्लियामेंट बन रहा है, नया संसद का एक तरह से आज उद्घोष हो रहा है भारत में, वहां तक इसको एक प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से पहुंचाए और हम भी जल्दी से जल्दी प्रयासरत रहे कि भारत में भी हम इसे लागू करें। तो ये सामाजिक शांति और फिर न्यायिक शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे विचारों को सुना। थैंक यू मनोज जी, बहुत अच्छा बोला आपने, किसानों के लिए भी अच्छी बात करी है। हम सभी चाहे आज शहरों में आ गए लेकिन कहीं ना कहीं हम किसानों से, किसान परिवार से जुड़े थे। आज नहीं तो पहले जुड़े थे, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है
80% लोग कृषि की खेती बाड़ी पर निर्भर करते हैं। तो हमारी आत्मा एक ऊंची अवस्था है, हम आत्मा को मिलाते हैं, ना कि व्यक्ति और उसके गुणों को, ना उसके शरीर को, ना रंग को, ना उसके धर्म को। तो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा, मिस्टर HP कैन जी हैं हमारे लिए, जो कि रिटायर्ड चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स हैं। Have been dreaming, of course all of us are dreaming of one peace, but it is elusiveness. HWPL was started by Chairman Manhili. He is a war veteran, as has been explained by Mr. Manu Singh. He realized the futility of war and violence, and he also realized that the victims are the women and the young children, who lose their husbands and their fathers, and perhaps are forced to indulge in such activities which they never wanted to. So with these motives that he started the movement for world peace, and gradually the religious leaders of almost all major faiths, they came together. They also made their support available to them, and some of the political leaders and some civil society activists, they said yes, there should be an end to war and violence, and there should be peace in the world, and we should all work for achieving this goal. This was the movement. Then it gained momentum, and I am associated with this organization since 2014, and I have attended almost the annual conferences, and also the process and also the drafting of Declaration of Peace and Declaration of World Peace and session of our document. It has it has been drafted by a body of legal luminaries, former and current chief justices of various Supreme Courts, and also the professors of law. They have drafted it, and again, when we have this DPCW, we also know as to what will be ultimately its authority. Even though it is formed and it is ratified by some of the parliaments of the world, but what is its authority? It can enforce. Suppose it says that yes, no country will shelter the terrorists or any armed groups that are going to disturb the peace of the world. But if suppose any group or any country which is supporting such groups, they help them, then what is the authority with this DPCW to enforce its implementation? The idea is that once we have this DPCW, this legislation, and having support of the world community, we go to the UN and request to adopt it. Once it is adopted by the UN, then only it can work. As has been explained by Mr. Manu Singh, see, the peace, everybody wants it, and but we do not perhaps know as to how to go about it. See, as I can see, and that is what the Lord Buddha has said, this hatred and greed, these two are very important factors that disturb the peace of the world. If you have hatred, naturally it begets hatred, and naturally when it begets hatred, then everybody is at conflict with each other. So we cannot have any peace. From here it goes to the international level also, where there is the imperialistic designs of some of the countries, and naturally they try to take undue things from others. Likewise, the greed. If you have a greed, naturally you tend to take undue share from others by depriving them of their due share. Naturally, it creates heartburn and it creates clash. So there also there cannot be peace.
this can extend to the national and international level also, where one country has agreed and perhaps tries to adapt some of the resources of the other country. So first we need to have that kind of feeling that we will not have hatred and will not have greed, and that's why thereafter then we will be at peace, and then the rest of the community will be at peace. The HWPL, as perhaps you all of know, and also has been said in the video, their achievement, at least one achievement is quoting. There is an island of Mindanao in Philippines, and their Christians and Muslims have been at lower heights for almost 40 years. With the efforts of Mr. Lee and this HWPL, ultimately both the communities have come together. They have signed peace agreement, and now they are at peace. So this is one of the achievements, and I am sure the HWPL, with the support of all of us world over, will be able to bring peace elsewhere also in the world. With these words, I thank you, all of you, for being here, and also Mr. Chundo and Mr. Rupendraji. Esther has come all the way from Karnataka, so I thank everybody for that. Regarding HWPL. So HWPL is Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Life. This is an international peace NGO founded for global peace and cessation of war. So HWPL has two partners, which are also called as two wings of HWPL, which work together in everything, which is IWPG, known as International Women's Peace Group, and also IPYG, which is International Youth Peace Group. So HWPL is founded by Chairman Lee Man Lee, as also he was introduced by Kane sir and also Manu sir. So Chairman Lee Man Lee experienced the ravages of war in front lines and founded the group to build world peace that may leave legacy for future generations. If we look at the current state of the world, we come to notice that there is an urgent need to come up with actions that could practically bring up end towards the war. Despite there are so many peace organizations, but peace was not established until now. We believe that peace starts from an individual participation, and hence we urge people around the world to join together as a peace messenger with HWPL. So now I would like to show a few glimpses of HWPL, the work that we have been doing. I would like to share a video on it. I will ensure peace in the world so that people can live in harmony, transcending borders, race, and religion. On March 14, 2016, the 10 Articles and 38 Clauses of the Declaration of Peace and Cessation of War was proclaimed. In May 2018, HWPL introduced the DPCW to the UN permanent representatives of 145 countries. As a result of the efforts to resolve the conflict in Mindanao, Philippines, January 24th Mindanao Peace Agreement Day was declared. Also, HWPL days such as the Declaration of World Peace Day and September 18th World Alliance of Religions Day were designated in various countries around the world. The efforts to remember and commemorate peace are being achieved through HWPL Peace Museum, Library, and Peace Park. HWPL is making efforts with the world to cease wars and to leave a world of peace as a legacy to the future generations. The peace movement of HWPL, joined by all people around the world, will change the future of mankind to peace. For a new era of eternal prosperity that everyone has dreamed of, we will follow the path of peace together as HWPL. Is Alliance of Religion, which is WARC office. So HWPL WARC office is a place for religious leaders to discuss and share values of faith based on religious texts, that is on their scripture. This helps them to prevent
religious conflicts and to discover building directions and path towards building peace. So most of our religious leaders have been making effort, contributing their time and gathering on Zoom in order to discuss and have peaceful conversations. And our third main project is peace education. To spread the spirit and culture of peace emphasized in Article 10 of DPCW, HWPL developed the peace education curriculum, which is conceptualized peace and its value. It has been provided to all the schools and also colleges around the world, to let the young generation grow up by knowing the importance and awareness of peace. So, as we see, we also have Sir D.K. Pal, advocate from Supreme Court over here. We are greatly honored to have you here, sir, and would like to hand over this mic to you so that you could speak a few words. I will take only a few minutes to Sure. say. I have brought with me the Law and Justice, the journal which was edited by SOCIOECONOMIC, who has also sent a message for the 6th HWPL meet in June, which I attended. I'm giving it to spoke very well. And just one copy I would like to give to our and what I would like to give Mr. Manu Singh, who has spoke about the Indian culture and ethics. Very well done at Gurdwara University and at Bangalore recently. They have conducted a program of DPCW in Bangalore. It is very good sign of that. We will promote it. And then we have at Dhaka University, with which HWPL has relationship, that is being carried forward with different projects there. So we would like our community here, those who are present, to study DPCW. Not that we are following it, to study it clause-wise. There are 10 clauses, 35 clauses also. When that promotes how we can be helpful in promoting peace by promoting DPCW. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much for explaining regarding DPCW in a short note. So, excuse me, I would like to present this book to you for more studies on peace. We have developed it on spiritual literacy for peace. So I would like to give an honor to give you this. Thank you very much. And this is what is something very unique and innovative without mentioning any religion. also share the screen. So if you scan the code, there will be a Google link which will open up. You can use your mobile and you can proceed to join HWPL membership. Tap the shutter button to search. So what are the benefits on signing up the membership? I would also like to shortly explain about it. If you join HWPL membership, you can participate in various peace and human rights activities such as webinar, peace education and also projects which are done by HWPL. And since HWPL belongs to UNECOSOC, that is UN Economic and Social Council,
You can also cultivate a global network with youth in the world. Now, I would request you all to scan the code and sign up for the membership. That would be a great participation. So there will be also an option when you open up the screen. It will ask for branch. So you can choose Global Branch 3 over there. Now I would like to explain regarding DPCW in a very short note. So DPCW stands for Declaration of Peace and Cessation of War through the collaboration of world-renowned international law experts. HWPL has drafted and announced 10 articles and 38 clauses of Declaration of Peace and Cessation of War. So these articles and clauses aims to restore and uphold the spirit to encourage the United Nations to promote the universal value of global community, which will lead towards realization of sustainable peace. The universal law drafted by DPCW includes the principles and measures to prevent and resolve conflicts and sustain a peaceful global society. Now let us watch a small video regarding DPCW. It is now time to end this violent generation and emerge a new generation, a generation where peace leads the world. People around the world are gathering their hearts for the DPCW to be submitted to the UN General Assembly in the form of a draft resolution and the peaceful unification of the Kashmir Peninsula. All leaders should support the DPCW in its way to becoming a new international legal instrument. As an international legal instrument for peace with worldwide support, the DPCW will end wars once and for all and achieve peace. Have been broadening the scale and scope of global support for the declaration, as we see that peace comes to fulfill only when every individual gather as one. So I really want to encourage you this time to sign up a support form for DPCW. So you can see on the pamphlet there is a second QR code. Just as Mr. Pal also said that please study regarding this law. If you go on the homepage of HWPL, you can go through all the details of this DPCW law which is drafted by HWPL. Now I would like to request you to scan the QR code and sign up your support. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਾਡਾ ਖਿੜਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤਿਵਾਰੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ITI ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਡੋਕ, ਮੈਂ ਚੀਫ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ HWPL ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 10ਵਾਂ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਪੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਭੇਦ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਅੱਜ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਮਤ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਵੰਡ ਛਕੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਐਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ? ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋ ਔਰ HWPL ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਸਰਬ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। तो असी उस गुरु की औलाद आ जिसने सानू एक मतलब ऐसा रूप दिता है, ऐसा मतलब इंसान बनाया, ऐसा सिंह सजाया कि दुनिया के जिथे भी कोई खतरा होंदा है, जिथे भी कोई उत्पाद होंदा है, तो असी उत्थे जाके मानवता की सेवा करते हैं। बहुत बहुत थैंक यू सर तुहाडा, आप जी दा, आप जी बहुत वधिया उपराला कर रहे हो। थैंक यू सर। सत श्री अकाल। मेरा नाम हरप्रसाद केन है। मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस में था, वहाँ से चीफ कमिश्नर के पद से रिटायर हुआ हूँ। उसके बाद से मैं NGOs में एक्टिव हूँ और ये जो HWPL है इनसे मैं 2014 से जुड़ा हुआ हूँ। उनकी पीस एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर भी मैं हूँ और 2014, 15, 16, 17, 18 में मैं रहा हूँ उनके साथ। यहाँ भी प्रोग्राम हमने उनके किए हैं HWPL के और वहाँ भी होते रहे हैं। जैसे आप सभी को पता चला होगा कि HWPL ये ऐसी संस्था है जो विश्व शांति के लिए काम कर रही है। उसको पता है कि युद्ध से कुछ नहीं होना, युद्ध की विभीषिका में से सब वाकिफ़ हैं। इसमें लोग इतने यंग ब्लड ज़्यादा मरते हैं, उनकी आप देखिए उनकी विधवाएं हैं, उनके बच्चे हैं, उनका भविष्य जो है बिल्कुल अंधकार में हो जाता है। यही सब सोच के ये सोचा कि शांति के लिए काम किया जाए। और वैसे भी जब भी कभी युद्ध होता है तो आपको मालूम है कि युद्ध के बाद भी अल्टीमेटली जो है उस डायलॉग ही होता है, संवाद ही होता है, जिससे क्या होता है कि जो जाने चली गई हैं उनकी तो कोई वापसी नहीं होती है। बस ये है कि कुछ अपने पीछे ऐसी विभीषिका छोड़ जाते हैं, ऐसे दर्दनाक किस्से छोड़ जाते हैं जो पीढ़ियों तक दुख देते हैं। तो इसलिए विश्व शांति के लिए HWPL जो ऑर्गेनाइजेशन है सियोल बेस्ड है, उसका बहुत बड़ा योगदान है और इससे बहुत लोग जुड़े हुए हैं। जो भी पीस लविंग पीपल हैं वो सब जुड़े हुए हैं वर्ल्ड ओवर, वो काम कर रहे हैं अब शांति के लिए। उन्होंने एक DPCW एक क्या था डिक्लेरेशन ऑफ पीस एंड वर्ल्ड सेशन ऑफ वार, एक लॉ भी ड्राफ्ट किया हुआ है। सभी काफ़ी पार्लियामेंट से और रेटिफाई भी हो चुका है। अब उसको UNO में भेजना है जाके वहाँ अडॉप्ट हो सके, चूँकि UNO के पास ही जो है एनफोर्सिंग पावर है, मतलब उसको लागू करने की इकोनॉमिक सैंक्शंस या फिर आर्मी इंटरवेंशन की तरह से के रूप में। तो इसलिए हम सबका ये कर्तव्य बनता है, चूँकि सभी शांति चाहते हैं, हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि HWPL के एफर्ट्स को हम लोग सपोर्ट करें, उनको अच्छा समर्थन दें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसके सदस्य बन के हम ये संदेश दें कि हम भी शांति चाहते हैं। तो यही बस इतना ही ये संदेश है और आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे भी कार्यक्रम होते रहेंगे भविष्य में। थैंक यू। धन्यवाद सर। तो आओ आज मिलते हैं, आज का जो प्रोग्राम हुआ है उसके बारे में जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आपका नाम? मेरा नाम बीना जैन है। मैम, आज जो प्रोग्राम हुआ है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जो आज का प्रोग्राम हुआ है इसकी हमारे देश को, हमारे को अपने को, हमारी सोसाइटी को, समाज को बहुत सख्त ज़रूरत है। क्योंकि हमारे यहाँ जो छोटी छोटी बातों पे हम अपना टेम्परामेंट लूज़ कर देते हैं, उसको हमें सीखना ज़रूरी है कि शांति सबसे बड़ा टूल है जो हमको अच्छा रखती है सेहत वाइज, हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे बच्चों को उनमें ऐसी चीज़ नहीं आने देती कि वो वायलेंट हो जाए। तो ये मेरा मैसेज सारी सोसाइटी को रहेगा कि हमें बहुत सख्त ज़रूरत है पीस की। मगर यही नहीं कि हम ऐसे प्रोग्राम अटेंड करके चले जाएं
और हम कुछ ना करें। हमारे जितने भी मेंबर यहाँ पे आज इन्होंने अटेंड किया है वो बहुत पर्टिकुलर हैं इस बात के कि अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में, अपने पास जो इनके बच्चे सीखने आते हैं वो उनको सब बहुत ही प्यार से और पीस की बात बताते हैं और सिखाते हैं। मैम, आज यंग जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यंग जनरेशन को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप अगर जो भी अपनी बात मनवाना भी चाहते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है गुस्सा और वायलेंट करके मांगने। आप अपनी वो बात कह सकते हैं कि आप ये बात क्यों करना चाहते हैं, उसका रीज़न बताइए। और माँ बाप को भी मैं ये कहना चाहूँगी कि वो उसके बच्चों को सुने और समझें कि वो ये क्या चाहते हैं। तभी हम अपने साथ चल सकते हैं, माँ बाप के साथ या बुज़ुर्गों के साथ, तभी हमारा साथ चलेगा जब हम एक दूसरे की बात को समझेंगे और सुनेंगे। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच।